बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. Why? Because with the crown comes up a responsibility, and with that responsibility comes the responsibility of not only managing your image but also the image of this grand platform which is called FCR, right? So आपको अपने image के साथ साथ FCA का भी image publicly, public image भी आपको सुधारना है, संवारना है, संभाल के रखना है. So that is why it is very important to understand what is public image, what is media interaction, what is all that is going to happen during the media interaction, and how are you going to conduct yourself within that. So let's get ahead and understand public image. Can anybody let me know what is public image? What do you understand by public image? Hi Sonu, this is Prashasti. I can try. Yeah, please go ahead, Prashasti ji. All right, so very good evening. Good So evening. I would like to tell public image is something when people know you, especially when you are famous with regards to, you are representing maybe a company or a brand or anything when you are representing. So that brand or that company is known by your name. So Absolutely. if you are presenting that company, you are the face of that company. So everyone will be knowing that, okay, this person has been selected or working into this company. So they have, they perceive an image of that brand according to you. So that is what public image does to a particular brand or any organization. एब्सोल्युटली प्रशस्ति जी, आपके सारे सेंटेंस में आपने एक्चुअली जो लास्ट की सेंटेंस बोली वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी. योर इमेज इज परसीव्ड in the minds of others, right? So what is image? Image is nothing but your perceived value in the minds of others. Okay, it's all about आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं अपने दिमाग में, वो होता है इमेज. एंड ये कोई और नहीं बनाता है, ये हम खुद अपने लिए बनाते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने मेरे लिए ऐसा इमेज बना लिया है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है. इट्स नॉट अबाउट द पर्सन इन फ्रंट कि उसकी गलती है, उसने आपके बारे में ये इमेज बनाई है. इट्स एक्चुअली इमेज जो बनती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डू वी वांट आवर इमेज टू बी, राइट? ये इट साउंड्स वेरी हार्श, बट यस, the image that you build is your responsibility and not anyone else's responsibility. And अब तो आप सब crown holders हैं, आप सब queens हैं, आप सब already FCR के प्लेटफॉर्म पे फैसिलिटेट होने वाले हैं, क्राउनिंग होने वाली है आपकी. तो आपकी एक इमेज ऑलरेडी लोगों के दिमाग में बन चुकी है. क्योंकि जब हम मिसेस ब्यूटी क्वीन विनर्स की बात करते हैं, सो लाइक दे आर परसीव्ड एज द मोस्ट हार्ड वर्किंग कैटेगरी ऑफ पीपल. बिकॉज एक तो हम मिसेस कैटेगरी, उसमें भी इट्स लाइक विनिंग अ क्राउन, कॉम्पीटिंग विद सो मेनी पीपल एंड देन गेटिंग इट. सो योर इमेज हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट. Now it's your duty to sustain on that image, both on your social media front and your media interaction front when you come face to face with the media. Currently, you are being perceived by your social media itself. So whatever you post, whatever you talk, whatever you comment, whatever you share on your social media is all being judged. Okay, if I be very point blank, it is being judged. People हमें observe नहीं करते, people हमें सीधा judge करते हैं based on our first impression. Now our first impression gets created by the way we are, okay, the way we look, the way we talk, the way we write, the way we express our feelings. All these factors are made of creating our first impression. एंड हर कोई इसके बारे में हमें जज जरूर करता है. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. वी आर डूइंग इट फॉर अदर्स एंड अदर्स आर डूइंग इट फॉर अस. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब हम सोशल मीडिया पे है, जब हम ऑलरेडी एक मीडिया, नाउ आज के बाद I don't want you all to call yourself just having a social media presence, but you all are influencers. Now your social media handles are not just handles, they are not just IDs, but they are, you have to believe that you have to come in that mode that your social media IDs or your handles are your influencer handles. No problem, Preeti, that's absolutely fine. ठीक है?
So what you need to understand, whatever you write, whatever you say, whatever you convey through that handle, through that post, it gets reaches out to your audience. And आपके audience में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो आपकी तरह इस crown को पाना चाहते होंगे, जो आपकी तरह इस journey में आना चाहते होंगे, but वो नहीं आ पाए, उनके अपने apprehensions होंगे, but आप you all can influence them. That is why it's your influencer channel. So what you post on that social media builds an image for you and also for the company FCR. तो आप FCR के बारे में जो भी लिखे, जब आप FCR को टैग करें या जब आप ट्रेनर्स को टैग करें, तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि whatever you are tagging, writing should be making sense to people. It should not be like anything random that you are tagging and writing. Not today, but even post this. पोस्ट FCR जर्नी ऑल्सो आप जब भी कुछ भी अपने हैंडल पे लिख रहे हैं या भेज रहे हैं या कर रहे हैं, उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए, उसके पीछे एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि या तो वो चीज आपको प्रमोट कर रही है, या तो वो चीज आपको इम्प्रूव कर रही है, या आपको कुछ उसमें से यू आर गेटिंग अ लर्निंग, और somebody else in your crowd is getting a learning, right? So always post things जिससे लगे कि हाँ दूसरा भी इन्फ्लुएंस होगा positively. So a positive influence is very, very important. Second thing is giving due credit. So during this FCR journey, whatever brand you are using, even if you are going to buy something from your local market and using it, give credit to that brand, tag that brand. Because once you put up that photo or a video of yours with the crown, I'm sure the brand would like to come back to you for a collaboration. Okay, that is the way you go ahead. You all work on social media through collaborations only. And जब तक आप collaboration नहीं करोगे, जब तक आप एक वो warmth वाली feeling नहीं लाओगे कि even without the brand saying you are tagging them, you are promoting them, you are telling that you are using these brands, तो वो क्या करती है, वो उनको visibility देती है. तो जब उन्हें visibility मिलती है, of course they will also tag you, they will also promote you that you as a FCR winner are wearing their gown or their heels or using their makeup, whatever it is. Okay, so always give due credit to the brands that you are using, always tag them, and always say thank you. Use these golden words: thank you, please, gratitude, pleasure. So ye sare golden words hai which you should be using on your social media handles, because when you are a crown winner, a Mrs. Crown winner, you must come across as a person who is very warm, welcoming, who is approachable. जो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, ऐसा लगना चाहिए कि नहीं आप में कोई एटीट्यूड नहीं है, भले आप क्राउन विनर्स हो बट you don't have that attitude, because influencers can't have attitude. They are there to promote people, they are there to influence others. Okay, the second thing that is most important is show your personality. Don't fake anything, because on social media if you try to fake, you will be caught in your real life. So whatever you are doing currently, whatever you are learning currently, whatever you are in terms of learning through this journey or learning otherwise also, show your personality as you are. आप किसी भी चीज में कुछ भी गलत, कुछ भी झूठ, कुछ भी फेक मत करिए, क्योंकि जब आप रियल में आएंगे वहां पे तो वो सबके नजर में आएगा. So always be as true to yourself, because being true is the most easiest thing. अगर आप कुछ भी फेक करेंगे तो उसमें आपको मेहनत लगेगी. Okay, so अगर आपका ऐसा है कि I'm a personality who is very giving and caring, but as a media influencer I should not be that. It's nothing like that. Please show your real personality, because that is how we will connect with you. Your audience will connect with you. Don't try to do anything which is not your thing. So if you are not a person who can show off a lot of skin, don't try to post pictures with it, gowns with it or dresses with it, showing off a lot of skin and you are being uncomfortable. Because when you come on the platform and if you are given such kind of a dress and agar aap nahi pehen paoge to wo nazar aa jayega. ठीक है, तो जो भी है जैसा भी है, please be the real self. Third thing that you need to do as a social media influencer is don't post anything negative. Don't get into any social media fight. वो पोस्टिंग की फाइट्स होती है ना, किसी ने गलत कमेंट लिखा, उसके बाद आप लिख रहे हो, फिर रिप्लाई कर रहे हो. Don't get into that loop. That is called social media loop. Please don't get into it. If you find that post is not correct, you can hide it or ask the person to remove it. If it is not been done,
then don't try to, report it or do something. You can always report it if it's a very vulgar comment. That's your right. You can do it, but don't get into a fight. That is not needed. Just hide that comment and let it go. Okay. So, and then don't post anything which is not allowed as per the guidelines of FCR or as per the guidelines of a Mrs. Crown. So like maybe alcohol drinking, cigarette smoking, partying a lot, all these things is your personal choice. Please don't post it on social media during this journey, because that will hamper your image as a Mrs. Consultant. Sorry, Mrs. Candidate, right? So if you are into it, that's your personal choices. Please keep it limited. जितना limited हो सके उतना रखिए, ज़्यादा post करने की ज़रूरत नहीं है. So these are the things which you need to take care on social media when you are with your Instagram handle or your Facebook handle. The second thing which is important is consistency. तो अगर आप FCR के बारे में पोस्ट कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंटली उनके लिए पोस्ट करिए, या ताकि आपकी लर्निंग जर्नी दिखे. Because understand, there are many ladies or young girls in your account, in your followers list, who would like to be a part of such kind of an event, but they don't, because they have some inhibition or they don't know what really happens. But when you show your journey, when you show your learning journey, your training journey, the kind of things that you have learned or experienced, it becomes a learning for them. So might be they can be the next, crown holders. That is how you become influencers and mentors on social media. So always post with a consistency. Consistency का मतलब ये नहीं कि every day आप post करें, but maintain a consistency कि every 2 days, 3 days, once a week आप जरूर post करें इसके बारे में या किसी भी चीज के बारे में, ताकि आप as a media influencer you can be there, right? So this is all about your social media things that you need to take care of. Now comes your media interactions. So media interaction would start, it has already started for you all, wherein you are everywhere on the media where FCI is talking about, right, as a crown holder. But जब आप वहां जयपुर आएंगे, जब आप स्टेप करेंगे जयपुर होटल मैरियट में, उस दिन से लेकर जब तक आप एग्जिट करेंगे, आपके एवरीडे मीडिया बाइट्स हैं, आपके एवरीडे मीडिया इंटरेक्शंस है, इंटरव्यूज है जो आपको हैंडल करना है. तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए टिप है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ABCDE of image management. Okay, so this is the acronym that I'm giving you, which is called ABCDE of image management, wherein A stands for your appearance. So your appearance should be perfect, starting from your head till your toe. It has to be perfect. Now, perfect does not mean it has to be always as a diva, but it has to be complete. Your hair has to be groomed well. Your face has to have a basic makeup. Your hands and your legs should be groomed well. Your clothing and your shoes, your footwear, your accessories, everything should be on a sync. Start practicing it from today, so that till the time you are there, it becomes your natural habit to do it every single day. Otherwise, वो आपके लिए task लग जाएगा. So that 4 days would be like task, getting up and putting up a little makeup. तो वो एक task जैसा लगेगा, but that is mandatory. आप नीचे breakfast करने आए या आप media bites दे या आप practice करें, you have to be in a proper appearance. Okay. In appearance, now your clothing and your grooming should be as per the place and the weather. Please take care of that. You don't have to be, out of the place मत हो जाइएगा, क्योंकि अगर ठंड लग गई तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. So always be mindful of what you are wearing, how you are wearing, and how are you carrying yourself. The second thing is that is behavior. Now, behavior comprises of your actions and your body language. So behavior में you might be a जो बहुत ही ज़्यादा loud है या बहुत ही ज़्यादा शांत है, who likes to stay alone or who is very loud and who wants to mix with everyone. But your behavior has to be as equivalent to that of a crown holder. Poise, composed behavior. You have to be calm, composed, and a poise in your way of walking, talking, and even meeting people. Right? When you are giving media bite, when you are giving media interaction, you are not supposed to be as loud. You have to control your nature. You have to control your behavior. If you are a very person who is very, very, petite and who is very, जो बहुत ही छुई मुई सी है, जिसको नहीं बात करनी है किसी से, then also you have to pull yourself to show that confidence, because understand media सीधा आपके face पे आता है.
मीडिया किसी को नहीं छोड़ता है. ओके, तो मीडिया बाइट जब आप देंगे तो आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए यू नीड टू वॉच अ वीडियो विच आई विल बी शेयरिंग विथ हैरी. शी विल शेयर द लिंक विथ यू of Manushi Chiller. She is giving a media interaction interview with a person. You need to recognize, you need to understand, you need to see how is she answering. Okay, what is her poise, what is her position of sitting, how much hand movement is she doing, how much calmness is there in her way of speaking. Okay, so you need to understand all these factors, and you need to also inculcate them, practice them every single day in front of a mirror so that you also can replicate the same. The second thing is your body language. Now, your body language on stage and the body language during the media interactions are very, very different. So when you are talking to media, understand a loud body language will not help. So you have to again control your body language. You have to control your body movements, your eye contact, your smile, your gestures. Everything has to be under control, and it will all come with due practice. ठीक है. Now, the body language में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो है आपके सिटिंग पोस्चर एंड स्टैंडिंग पोस्चर. तो स्टैंडिंग पोस्चर के जो इंटरव्यू है, अगर आपको स्टैंडिंग इंटरव्यू देना है, चाहे कोई पोडियम पे हो या सिर्फ माइक लगे हो एंड यू आर स्टैंडिंग एंड पीपल 3-4 तरीके से आपके पास माइक आया हुआ हो, तो जिस भी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, यू नीड टू लुक एट दैट पर्सन एंड आंसर द क्वेश्चन. अगर 4 लोग खड़े हैं तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यू हैव टू लुक एट दैट पर्सन फेस and answer his question or her question. And whenever you are answering his or her question, never forget to say a thank you before you start answering that question. Right? The second thing is when you are sitting and giving an interview. Now, when you are in a sitting position giving an interview, when you are on an interview panel, either you sit on a chair or on a stool, and you never sit like flat face to the camera. क्योंकि अगर आप ऐसे flat face बैठोगे, so it gives a very odd shape to your body, and your body posture is also not correct. So you always tilt your body a little. Okay, so always tilt your body a little at an angle and look directly in your face. So when you tilt this, when you make this tilt, your back becomes straight. Okay, and you sit taller. That is the way of sitting taller. So if you sit flat, you can slouch also. Your back will bend. But if you are sitting with a tilt, your back will always be straight. So sit with a tilt, face the camera in front. So this would be your sitting posture as per your body. Now for your legs, how do you keep your legs? So wearing a 5-inch heel, it becomes very difficult to keep your legs flat like this. Okay, flat like this on the floor. So I have also shared a video wherein I have showed you 3 sitting positions which can make you look like a lady. Okay, so you need to ace any one of them. So either you can sit cross angle, so only at the angle your legs cross. You can sit with a slant leg, or you can sit crisscrossed, one knee on the other, but you need to ace that position, because with heels it becomes very difficult to sit. It is easier to stand on heels rather than sitting. Okay, so you need to practice these 3 sitting positions. The video will be shared with you, and any one position you need to ace for all your interviews, because if you get that position right for every interview, it becomes easier to give only one sitting. Now if you are holding the mic with one of your hand, whichever is your dominant hand, ट्राई पकड़ रहे हैं अगर माइक है तो दूसरे हाथ का आप इस्तेमाल करेंगे कोई भी चीज बोलने के लिए या बताने के लिए, बट इतना भी मत करिएगा कि वो पूरे जगह पे दिखे. अगर आपके पास कॉलर माइक है, if you are on a collar mic which goes here or is attached to your gown and dress, so you need to use both your hands. Okay, so you need to use both your hands to enhance certain things. या कुछ बात करने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें, उन्हें फिक्स मत कर लीजिए कहीं भी, और बहुत ज्यादा भी यूज मत करिए. So I don't want you to dance also, and I don't want you to be a robot also. So use it naturally. कैसे करेंगे? When you are sitting like this in a slant position, in a tilt position, your shoulder to your elbow gets fixed to your body. This has to be as close to your body as possible. इसको हमें मूव नहीं करना है. हमें क्या मूव करना है? फ्रॉम योर एल्बो टू योर फिंगर. तो ये जो हाथ है, दिस पोजिशन,
From your elbow to your finger only you are supposed to move. So if I just show it to you, so if I'm sitting like this, so my this hand gets fixed and only my this hand moves. Okay, so this is the only movement allowed when you are not holding a mic. And even if you're holding a mic, you can just use this hands this much, because आप जितना ज्यादा हाथ बढ़ाएंगे उतना एरिया आप कवर करेंगे, which becomes very uncomfortable. ओके, तो आप जितना कम एरिया कवर करेंगे उतने ही आप ग्रेशियस लगेंगे, उतने ही आप पॉइज्ड एंड काम लगेंगे. अगर आपके हाथ ज्यादा मूव करेंगे तो आप ओवर द प्लेस लगेंगे. ठीक है, तो आपके हाथ के मूवमेंट बस इतना ही होना चाहिए, बट डोंट मेक इट रोबोटिक. प्रैक्टिस करिए ताकि वो आपका नेचुरल हैंड मूवमेंट लगे. तो जैसे मैं अपने हैंड्स को इतना ही मूव करूंगी जितना आप तक ऐसा ना लगे कि मैं आपको खा जा रही हूँ या मैं आपके पर्सनल जोन में एंटर कर रही हूँ. राइट, सो दिस इज अबाउट योर हैंड मूवमेंट. अबाउट योर आई कॉन्टैक्ट, तो जब भी आप किसी रिपोर्टर से या मीडिया पर्सन से या इवन अपने जजेस से या अपने को कंटेस्टेंट से आप मिले, तो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट. नाउ आई कॉन्टैक्ट कैन समटाइम्स बिकम लाइक अ स्टेयर. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी के आंखों में देखें, तो ऑलवेज लर्न दीज टू पोजिशन विच इज कॉल्ड द सोशल गेज एंड द पावर गेज. सो व्हाट इज द पावर गेज? So when you make a triangle like this, okay, in your mental frame, try to make a triangle in front of the person's face, okay, and you look anywhere in between this area. When you look anywhere between this area, this is called the zone of power gaze. ये businesses में use होता है, corporates में use होता है. तो जैसे आप किसी रिपोर्टर के साथ या आप अपने जजेस के साथ मिलते हैं, इसको इतना ही देखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वो देता है आपको डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट. अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे से कम हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए एंड यू मूव टिल योर नोज, टिल द नोज ऑफ द पर्सन. तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक किसी को देखेंगे इस एरिया में, यू मेक अ शेप लाइक दिस, लाइक अ काइट, तो ये आपका बन जाता है एरिया ऑफ सोशल गेज. मतलब आप किसी भी सोशल सेटिंग में किसी को इतना देख सकते हैं टू मेंटेन अ डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट. अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो या तो आप नीचे देख रहे हैं बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा ऊपर देख रहे हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए. व्हाट वी नीड इज अ डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, एंड वो भी अगर स्टेयर नहीं करना तो आप पावर गेज या तो सोशल गेज इस फ्रेम में ही किसी को देखेंगे. गुड, यू अंडरस्टूड एनीथिंग? इट्स क्लियर, राइट? So now next comes after eye contact and your hand movement and body posture and leg posture is your smile. So please don't forget to give your pageant smile. That is the most important thing. You might find the question very difficult. You might not know the answer. You might be feeling stressed. You might be feeling, nervous, but your pageant smile should always be there. Give me a pageant smile. All of you just smile. How do you give a pageant smile? Then why are you not smiling? Why are you all so serious? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, ये बार बार ये स्माइल लेना. ओके, तो ये पैजेंट स्माइल हमेशा अपने फेस पे रखिए. ये एप्पल हमेशा बनने चाहिए, ये आंख हमेशा क्रिंकल होने चाहिए, ये पैजेंट स्माइल हमेशा आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आएगा तो हर चीज आपसे पॉसिबल है. ओके, योर कॉन्फिडेंस वुड बी सीन थ्रू दिस. Otherwise, it's very natural for the face to become, sad or to become very confused. The face can take up any shape. The expression आपको पता भी नहीं चलेगा और आप blank हो गए हो. लेकिन अगर ये pageant smile practice करोगे हमेशा रहेगा, तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आप किस position में हो. Okay, so this is about your behavior. So appearance and behavior becomes the critical factor when you are sitting in front of the media. The third thing is your communication. Now, communication again plays a very important factor because you need to answer. Okay, so you need to talk, you need to answer, you need to revert them. तो हमेशा ये याद रखिए कि answer in a language which is comfortable to you. जिस भी language में आप सबसे ज्यादा comfortable है उसमें बात करिए. लेकिन जब आप उसमें भी बात करें, जिस भी language, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, pronunciation, लहजा, जो क्लैरिटी है उस शब्द की, वो क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और मेरी हिंदी भी किसी को समझ में ना आ रही हो. और हैविंग अ टोन और हैविंग अ मदर टंग इन्फ्लुएंस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज नॉट द पॉइंट दैट विल पुट यू डाउन.
But if you are pronouncing a word wrong, if you are not having that clarity कि वो किस लहजे से बोला जाता है उस शब्द को, that will put you wrong. So if you are speaking in English, British English or American English, stick to one language. Don't mix them up. Okay, इंग्लिश में आंसर नहीं करेंगे जब तक आपसे क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा जाता, but try to stick to one language and have clarity on that language. आपका टंग, जो ये जीभ है ना, किसी किसी शब्द में या किसी किसी वर्ड में लटपटा जाता होगा, श, स, र, त, ह. तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी शब्द में अगर वो जीभ लटपटा रही है, उस शब्द को आप क्लैरिटी से प्रैक्टिस करेंगे जितनी बार हो सके, क्योंकि जितना आप बोलेंगे, जितना मुंह खोल के बोलेंगे. नाउ किसी किसी को आदत होती है मुंह बंद करके बोलने की. यू डोंट ओपन योर माउथ. सो व्हेन आई एम टॉकिंग, आई हैव टू ओपन माय माउथ, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट साउंड राइट. वो लहजा नहीं आएगा, वो पॉलिश फिनिश नहीं आएगी, वो वर्ड सही साउंड नहीं करेगा. ओके, सो डोंट थिंक कि मैं ज्यादा मुंह खोल के बात करूंगी तो लोग कैसा लगे. अब ऐसे भी नहीं बात करते हम, but you have to open your mouth in a proper way. So if a sound of A is A, you have to speak apple. You can't speak apple, right? So अगर हमको apple बोलना है तो A इतना तो खोलना ही पड़ेगा ना. I can't speak apple, then वो apple नहीं रहता, वो apple हो जाता है. Okay, so नहीं, अगर आपके घर में बच्चे हैं जो फोनिक सीख रहे हैं तो प्लीज उनसे सीख लीजिए. दैट्स इजियर. दे विल टीच यू मच वे बेटर देन एनीबडी एल्स. ठीक है, अदरवाइज यू कैन लिसन टू वीडियोस. आप वीडियोस देख लीजिए, ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, जो आपकी वॉइस क्लैरिटी, जो स्पीच है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली स्पीच क्लैरिटी. तो जिस भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम है, ट्राई सेइंग टंग ट्विस्टर्स, तो उससे आपकी क्लैरिटी आती है. दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपका स्पीड. Okay, the speed at which you talk. तो किसी किसी की स्पीड बहुत ज्यादा है. Now how do you identify what is your speed? तो आप 1 मिनट का टाइमर लगाइए and open any chapter of any book. Start reading it from the top, and when the timer stops, just stop wherever you are. Then you can count the number of words with the spaces. How much have you read? So if you have read anything beyond 160 per minute, 160 words per minute, you are a fast speaker. If you have read anything less than 90 words per minute, then you are a slow speaker. A average speaker or a good speaker speaks at around 120 to 140 words per minute as per Asians. Okay, so we are Asian race. So as per Asian race, 120 to 140 words per minute is the correct speed that you need to speak on. तो अगर आप fast बोलते हैं, you need to control it. अगर आप slow बोलते हैं, you need to buck up. अगर आप बहुत हाई पिच, हाई टोन में बात करते हैं, तो देखिए आपकी टोन चेंज नहीं हो सकती, राइट? आपका जो वॉइस का जो साउंड क्वालिटी है, सॉरी साउंड क्वालिटी है, वो मैं चेंज नहीं कर सकती. अगर आपका वॉइस श्रिल है तो वो है, अगर आपका वॉइस क्लियर है तो है, अगर तेज है तो है. व्हाट यू कैन डू इज pace out your answer or your words so that it lowers your shrillness. तो जितना आप अगर आप श्रिल बोलते हैं, try to speak slowly. अगर आप तेज बोलते हैं, try to speak slowly. अगर आप बहुत low voice पे बोलते हैं, try to speak faster. So whatever it is, just do the opposite of it. That will help in building your communication in your words. And the third thing which you need to work upon is your fillers. Okay, fillers क्या होते हैं? Anybody can let me know what is a filler? What are fillers? So I'll tell. Fillers are like when we are speaking a sentence, so in between we do yeah, okay. So certain things when we don't know what to speak and we are thinking in that process. Right? Absolutely. So those are known as fillers. Absolutely, प्रशस्ति. तो ये होता है कि जब हमारा दिमाग सोच रहा होता है, जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते कि क्या बोलना है आगे, तो दिमाग सोचने लगता है, लेकिन मुंह को लगता है यार दिमाग सोच रहा है, मैं चुप कैसे रहूं. तो जब मैं चुप ही नहीं रह सकता तो मैं कुछ बोलूंगा, राइट? या बोलूंगी, तो मैं बोलूंगी चक्कर में आई स्पीक ऑल दीज फिलर्स, राइट, ओके, विल सी. सो समबडी हैज दैट हैबिट ऑफ सेइंग दैट तकिया कलाम, okay, right, like. So they keep on saying after every sentence. तो आपको पहले तो अपने फिलर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि आप कौन सा फिलर सबसे ज्यादा यूज करते हैं.
एंड फिर उसे रेक्टिफाई करना है। आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? अगर आप आइडेंटिफाइड ऑलरेडी है, अगर आपको पता है कि आप फिलर यूज करते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता, इफ यू डोंट नो व्हिच फिलर्स यू आर यूजिंग, देन जस्ट गो टू वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स जिसके साथ आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, एंड गो एंड टेल देम दैट डोंट टेल मी बट यू ऑब्जर्व मी फॉर 2 days। मुझे बोलना मत, लेकिन तुम मुझे 2 दिन तक देखो, मुझे नोटिस करो कि मैं कौन सा शब्द, वर्ड या साउंड बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। Okay, so you have to tell them that don't tell me but keep observing me, keep noticing me for 2 days and let me know which word, sound or phrase I use a lot while I speak. On the 3rd day, go back to them and ask what is that list. So if that list has 1, 2 or 3, it's absolutely fine, but if that list has too many fillers, then you need to start working on them. नाउ ये नहीं हो सकता कि 10 दिन में आपके फिलर्स पूरे गायब हो जाएंगे, दैट इज नॉट द केस। द केस हियर इज यू शुड बी अवेयर कि दिस इज योर फिलर दैट यू आर यूजिंग। तो जब भी आपकी अवेयरनेस क्रिएट होती है, योर माउथ एक्चुअली शट्स अप। सो फिलर को चुप कराने का एक ही तरीका है, इज पॉज। So when you take a pause or when you take a break, so when your mind is thinking, just take a break, take a pause. It's absolutely okay. किसी को weird नहीं लगेगा ये चुप क्यों हो गए, right? So just take a pause or take a breathe of 3 seconds or 3 counts. So if you're doing this, it will help you reduce your fillers. And the second way of reducing filler is practice. So you have to practice your answers. So you have to maintain a diary wherein you write down all the questions that can possibly be asked to you by the media. So questions like, how are you feeling today? Or questions like, what does this crown mean to you? Or questions like, how has your journey been with FCR? Or how has your journey been as a Mrs. Crown winner? Or what are your learnings from this, crown? What is your future that you hold? What are your future goals that you want to do? So इस तरह के जो questions आपसे पूछे जाएंगे, जो भी questions आपसे पूछे जाएंगे, उसकी एक लिस्ट बनाइएगा। उस लिस्ट का आंसर लिखना है आपको। ना हमें ज्यादा भी नहीं बोलना, हमारी आदत भले ज्यादा बोलने की है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं बोलना है, ना ही हमें कम बोलना है। अगर हम 1 word आंसर देते कि yes, okay, no, go, then वो भी हमें नहीं करना है। So we need to at least write 3 to 5 lines for every question that needs to be asked to us and practice that. रिकॉर्ड करिए, मिरर के सामने बोलिए, फैमिली के सामने बोलिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को आंसर कीजिए, कुछ भी करिए, बट कीप प्रैक्टिसिंग दिस आंसर्स, बिकॉज जितना आप वो आंसर प्रैक्टिस करेंगे वो आपका नेचुरल सेल्फ हो जाएगा। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो अगर आपको मौका मिलता है, इफ यू गेट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग दिस टाइम बिफोर यू कम टू द ग्रैंड फिनाले, to go and talk to a crowd, or to address a crowd, if you are being called for a lunch, or if you are called for as a guest appearance or something like that, or you go to your nearby NGO and just speak to the kids or speak to the people. So the more you speak to others, it will help you in gaining that practice of speaking the right words and lessening your fillers. किसी को समझ में आ रहा है या सब कंफ्यूज हो गए? Okay, so the more you practice public speaking, so this is the art of public speaking. The more you practice public speaking, it will be easier for you to work on your voice tone, quality, pitch, volume, rate, everything. Because with family we speak at a certain speed, with strangers we speak at a certain speed, with professionals we speak at a certain speed. हम हर जगह अलग स्पीड में बात करते हैं, एंड दैट्स द ट्रूथ। आप हर जगह एक स्पीड में बात नहीं कर सकते, दैट्स द नॉर्मल ह्यूमन नेचर। सो आप जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, जितना अनजानों के साथ बात करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा जब आप अपना मीडिया इंटरेक्शन देते हैं। ओके, सो दिस is about communication, then about your social media handles, what you need to post, what you need to not post, how you need to behave, how you need to interact, how you need to interact with your people and your followers. जो भी comments आए, DMs आए, post पे आए, उन सब पे आपको कैसे interact करना है, we have all covered in digital presence. And finally it's about etiquette. Okay, now etiquette of a queen and a crown holder is at this place, wherein
starting from your personal etiquette till your business etiquette, your dining etiquette, the way you walk, talk, greet people, hold the cutlery, eat at the dining table, the conversation that you make, everything comes under etiquette and mannerism, which has to be at par. So you can't be like, as a crown holder, you can't be like poised, and when the crown goes down, you become another personality altogether. No, your etiquette means it has to be across the place wherever you are. It has to be the same. Okay, so the way you eat, the way you greet, the way you stand, sit, the way you stir your coffee, the way you eat your noodles and soup, and everything comes under your etiquette session, and that needs to be aced by you. So you can start watching few videos of basic etiquettes, dining etiquette and business etiquette and greeting etiquette. Okay, so you can just watch these videos little by little, basics. Don't go in so much of depth, otherwise you will keep watching it and you'll forget everything else, because एक बहुत बड़ा chunk है. Right, so these are the 5 things that you need to take care of as a public image person, क्योंकि public image जो है, personal branding जो होती है, वो हम खुद करते हैं, and यही 5 चीजें हैं जो हमारा image बनाती है या तो बिगाड़ती है. Okay, so that's all about from me. If there is any question from your end, you can just ask me your questions. I think the women are all sorted. मैं सोनू के social media details chat box में share कर रही हूँ. Make sure you guys follow her, reach out to her in case you have any queries. And thank you so much, Sonu. It was an absolute pleasure having you on board, and I'm sure the women had a lot to take away. I shall take your leave and just have some words with the participants. Thank you so much, and all you lovely ladies, always be purposeful when you post anything on social media. And all the best to you. May your crown shine and your life gives you a lot of happiness. Thank you so much.